If you see, I have, some parameters which I feel if I would be feeling deaf right now, these are the parameters which I'll prefer. अगर आपको लगता है कुछ और parameters पे चाहिए तो वो भी मुझे बता। तो इसमें मैं बेसिकली 1 से लेकर 5 तक स्केल दे दूंगा। You to do, they want to make, the government wants to make you responsible for something, and for doing that particular work they are giving you power to decide over that particular। तो पावर से ये मत समझ जाएगा कि ये पावर बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल आपको कर देगी। एंड एवरी पोजीशन, एवरी चेयर दैट यू विल सिट विल कम विद डिफरेंसेस। ऐसा नहीं है कि आईएएस अगर आपको मिला है तो हर एक पोजीशन जो आप होल्ड करेंगे थ्रू आउट लाइफ वो सारी पावरफुल पोजीशन होंगी, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको कोई बहुत मतलब सो कॉल्ड नीचे की सर्विस मिल गई और आपको कोई मतलब थ्रू आउट लाइफ यू विल नॉट बी सिटिंग इन अ पोजीशन ऑफ पावर। इट इज नॉट लाइक दैट। It depends on the exact position that you are sitting, the exact chair and the responsibilities which are associated with that chair. Your decision-making power will differ. Similarly, political intervention I have categorized as something which आपकी इंडिपेंडेंस कितनी होगी और कितना उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन लगेगा। ये सारी जो मैं प्रेफरेंसेस आपको बताऊंगा, ये दिस इज समथिंग व्हिच आई एम ड्राइविंग फ्रॉम माय पर्सनल इंटरेक्शन। Again, I have interacted with a lot of my service mates, but then again, they totally account for a very small group when it compares to the entire diaspora of services which is there. तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही ड्रॉ हो रही है। इसके बाद फैसिलिटीज, again facilities are something which have been provided by the government because they expect you to do a particular thing. They expect you to be available. They expect you that ये फैसिलिटी जरूरी है आपको आपका सर्विस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि आपको फैसिलिटी मिल रही है, दिस इज समथिंग व्हिच इज कमिंग अप विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको गाड़ी मिल रही है तो दे एक्सपेक्ट यू टू बी अवेलेबल एंड बी मोबाइल। सिमिलरली प्रमोशन इज समथिंग व्हिच डिपेंड्स अपॉन कि आपका कहां तक आप जाएंगे। ओके, इफ यू आर इन द अर्ली 30s or you are in the late on the 20s, then this should matter to you. If you are in the late 30s, कि अगर आपका 35 plus years of age है, तो I think promotion doesn't have that much impact and shouldn't have that much impact in your service preferences. Work-life balance, that is something which is totally personal. अगर आपको लगता है कि अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस होता है चाहिए आपको लाइफ में, तो इसके बेसिस पे आप प्रेफरेंसेस बनेगा। तो मैं आपको सर्विसेज को केवल एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको रेट कर दूंगा और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सी प्रेफरेंसेस चाहिए। आईएएस नो डाउट हैज अ लॉट ऑफ पावरफुल पोजीशन। पावरफुल मींस बहुत रिस्पांसिबल पोजीशन है और बहुत सारी चीजें आपको इसके साथ में आएंगी, जैसे कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन। अगेन दिस इज द हाईएस्ट पॉलिटिकल इंटरवेंशन फैसिलिटी। यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज बिकॉज द बेस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर। इट इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, तो आपको फैसिलिटीज भी। प्रमोशन के बेसिस पे इससे अच्छा प्रमोशन कहीं नहीं है। और वर्क लाइफ बैलेंस, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी बैड इन आईएएस, वेरी एक्सट्रीमली बैड। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम पोजीशन एंड द एग्जैक्ट चेयर दैट यू आर होल्डिंग, बट उसके हिसाब से आपका वर्क लाइफ बैलेंस सफर भी कर सकता है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा भी हो सकता है। नाउ कमिंग टू द फॉरेन सर्विस, रिस्पांसिबिलिटी पावर इज ह्यूज। पॉलिटिकल इंटरवेंशंस मिनिमल होता है, बट ऐसा नहीं कि एकदम न्यूट्रल हो जाता है। फैसिलिटीज, यू विल गेट बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज व्हेनेवर यू आर बीइंग पोस्टेड एनीवेयर। प्रमोशंस, देयर इज नो हिंड्रेंस इन द प्रमोशन and work life balance is fairly okay. This is the reason why people do prefer IFS. Again, this is something which totally depends upon your personal preferences, because the moment you will get IFS, be aware about it, you will not be sitting in the examination again. That is the end of your entire journey of UPSC. So before you fill it, be very sure कि इसमें आपको जाना ही जाना है। और it is not at all a bad service, it is a very good service. So but that depends upon कि आपको उस वाली लाइन में जाना है कि नहीं जाना। This is a very expert kind of a service. This is diplomacy differs a lot from bureaucracy. So IFS is all about diplomacy. Police service, there is a huge responsibility and power that you get. Political intervention, again, it is very huge. Facility, you will get the best of the facilities. Promotion, no hindrance. Work-life balance, again, it is very, very bad.
So since work-life balance is very bad, I think those who are preferring it for the work-life balance only, they can think about their own personal preferences. Coming to IIAS, आपको अच्छा खासा मैन पावर होती है आपके अंदर में, तो डिपेंडिंग अपॉन मैन पावर योर पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो एक्सपेंड. आपका HR के फंक्शन से इतने सिग्निफिकेंट हो जाते हैं कि आपको लगभग काफी टाइम HR में ही आपको निकल जाए. पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत कम है, but again that cannot be summed up to zero. Facilities wise it is good, promotion wise it has the best promotion, and work life balance also it has a very good work life balance. So if I say it might have one of the best work life balance at any civil service. Civil account responsibility power is again, this is something which is in my personal preferences. I would rate it somewhere here, but then again it depends upon the position, exact position that you are holding. Political intervention, again it has no political intervention. Facility wise it is not that great. Promotion wise it is okay, fairly average. And work life balance is very good. So work life balance you can regard it as one of the best. Corporate law services, it is a very new service, so you will find a lot of promoting officers here. You will find a lot of officers who are promoted from Group B, Group C and become IC, LS, Group A service there. But otherwise, work content, it has a fairly good work content. It is not something the work content is very bad. Political intervention is not that big, but it cannot be neutral also. Facility wise, it is not that good. Promotion wise, it is till now, since it is a new service, so they are in the process of reinventing themselves. The entire cadre, they are in the process of reinventing. So I would say something around 3. It is not bad, but up to JEG it is fairly good. Work-life balance, the work-life balance is good, but it could be better. Means it could have been better. So I would say it is something in this. Defense account, again, it's a very good service. Defense account, responsibility power, I rate it as 1. Okay, so it should be something like corporate law is okay. Okay. So defense account, responsibility power is not, responsibility power it is good. Political intervention it is 0 or very minuscule political intervention is there. Facility wise you get very good facilities, so something around 4. Promotion, there is no hindrance in the promotion, so you will get it through till GAG, it is fairly good. The promotion that I'm rating is not up to HAG plus level. That is not, I'm talking not about the secretary level postings. I'm talking about up to fairly okay, means SAG level I'm talking about. SAG मतलब होता है लगभग 20-25 साल तक. So 20-25 years is something which I'm targeting here when it comes to promotion. So promotion अगर आपका SAG तक timely हो रहा है, तो I'm rating it as good. इसके बाद work life balance is okay, it is good here. So work life balance also I'll rate it something at. Defense estate service, this service is very good in the initial years of your post, means up to 20 years or say 15-20 years. This will be very good. Political intervention again is very low. Facility wise it is good. Promotion wise it is okay, and work life balance is very good here, so I'll rate it as something around 4. Information service, see, information service is again one of the most specialized service in the government of India. It deals with the broadcasting, in the broadcasting domain. So if you consider broadcasting or your connections as your power, then you can rate it higher. However, if you are talking about your functional competence or functional domain in which you will be functioning, I'll be rating it, again, this is something which is my personal experience. This will differ from position to position. Political intervention is fairly okay or not that much. Facility wise it is again okay. Promotion wise it is okay, and work life balance is good. There's no doubt work life balance will be good. Then postal service, though you will see from the outside the postal service is a dead service. अब पोस्टल के ज़माने में पोस्ट ऑफिस में कौन जाता है, और नई जनता तो हमने पोस्ट ऑफिस भी नहीं देखी है. The young generation have never seen post office. So post office is something which is dead. But that is not entirely true. Post office still has one of the highest manpower in the entire nation. That has one of the highest
physical networks in the nation. In fact, more than the banking sector, the last that I have checked, it has more expansive network than the banking network itself in the nation. So in that way, your responsibility and power are quite good. Your political intervention, there will be political interventions due to your extensive reach. Facility wise also, this is okay. Promotion wise also, this is okay. And work-life balance will suffer. You see, whenever you are there at a particular position which demands a lot from you, then work-life balance is something which is often compromised. Now, PNT account and finance service, again, it depends upon the position you are sitting on. If you are in the headquarter, you will have limited power and responsibility. If in the field, you have a huge control. It's unlike any other service, it has a huge control and it has a huge domain. You will be working in the telecom, you will be working in the postal, you will be working, though it has accounts, I've never seen accounts in my entire life, but you will be working as a finance domain. Basically, this service collect the non-tax revenue. It has collect the largest non-tax revenue for the government of India. Political intervention, this is zero. So there isn't any case where I've seen that any politician has intervened into my personal functions. But yes, that way political intervention is zero. Then facility wise, it again depends upon which particular position that you are holding. Promotion wise, till JAG, it has a great promotion. You get promotions even before it is due. So work-life balance is totally depends upon you. Here, if you want to work, you can work for entire day. If you want to work, don't want to work, then you have to work, but that you can manage. Now, IRPF is a uniform service. So responsibility power, again, that is good. Political intervention will be there, but not that much. Facility wise, it is good. Promotion wise, it is not that good. And work-life balance, I do not say it is that great. IRMS. Now, this is something which is a tricky thing. See, earlier the three services got merged into IRMS. IRTS, IRPS, IRAS. Now, once you will go, if the demerger happens, then you will be asked for the particular service in this IRMS. So if your rank is good enough, you can get a service of your preference. If your rank is not that good, you might end up with a lower preferences among these three services. Among these three services, the most popular one is IITS, traffic service, because apparently they have a huge set of responsibility. But then again, responsibilities come with a toll of your work-life balance. So be aware that you will be dealing with problems which might come even late in the night. But that is currently true with nearly all the railway services. So responsibility power-wise, if I count for the all three services, IRPS also, personnel service also, then I would rate somewhere here. This again, I'm saying this is something which is very tricky. In case you have personal lineage towards railway, fill it up on a higher scale. If you have not that much affection with the railways, fill it a lower. Political intervention is not that much. Facility wise, again, it depends upon the position in which you are there. So it might be good, it might be bad. It depends upon the position that you are holding. Promotion wise, not that good. Right now, it is not that good, but it might improve in the future. I'm not saying it might not improve. Work-life balance, again, it depends upon which particular post you are holding. Now, revenue services, customs and indirect taxes. This is one of the good services which will give you a lot of responsibility and power. And power, again, I'm not saying that power is something which is earning more. Power is something which you will feel having a particular decision making power. I'm talking about here. So that way, it is good. Political intervention, it has political interventions. It might have. I'm not saying every decision that you will make have a political intervention. Facility wise, currently it is lacking, but it might improve in the future. Promotion wise, again, it is struggling, but then again, this might change.
And work-life balance, again, it depends upon the position to position, but I'll rate somewhere there. Average somewhere. Income tax is slightly, I'll say, better in responsibility and power, but then again, this is something which depends upon entirely upon which particular position you are holding. Promotion wise, again, it is something which is okay. Work-life balance, these days it is very hard. Indian trade service, this is the lesser known service. So position power is something, it is not that widely known. Political interventions, there are not many political interventions. Then facility wise, again, this is something which it is struggling with. Promotion wise, it is okay, not that great. And work-life balance is okay, it is good. AFHQ, I will not recommend you to fill it, not in the last. So in case you feel that this service you anyway have to fill, so I'll say give it the least preference. Again, nothing against this service or nothing against the armed forces headquarters. It is something, in my personal opinion, this should be filled at last. So I am giving a very low score here just for your reference. Political intervention, though it is not there. Facility wise, not that good. Promotion wise, not that good. Work-life balances, this is very okay. Now, DANIX and DANEPS. See, DANIX and DANEPS are two services. In fact, Pondicherry services. These are your personal preferences. In case you want to fill it, then you fill it. In case you want to, have more presence in the field, then you fill it. You can fill it on a higher level. You can fill it in a lower level. That depends upon your personal preferences. But this is something which I would suggest you to fill it in the last. This you can safely put it in the last. Now, DANIX, I'll rate DANIPS first. DANIPS is very good in the responsibility and power. This has a lot of political intervention. Facility wise, it is fairly good. Promotion wise, it is not that good. Work-life balance, it is not that good. DANIX, I would say, is slightly having lower facility power, responsibility power, but then it is good. Don't think that since I have put 3 here, it has become bad. It is good. Political interventions might be there. Facility will be there, but not that good. Promotions is something which it will suffer. And work-life balance is something which again will be taken a toll for. Now, Pondex is something which you will be posted in Pondicherry primarily. So if you want to go for Pondicherry, remember you have to stay in Pondicherry. Then you can go for this service. This is kind of PCS for UPSC. So it is not exactly PCS since you have been recruited through UPSC, but you can, if you want to draw a parallel somewhere, then you can think about Pondicherry Civil Service and DANIX as something which is PCS of UPSC. So just like the PCS, just like this, the responsibility power will be there. The political interventions might or might not be there. Then facility wise, it is okay, depending upon whether you want to be in Pondicherry or not. If you want to be in Pondicherry, rate it higher. Then promotion wise, again, there's some issues. Then work-life balance, again, this is something. Now, Pondex is something which I'll rate exactly as Pondex. So this is the entire metrics which I'll say for filling up your DAF. If you want to save it, if you want to revise your DAF according to this metrics, depending upon which preferences you are having, you can do it. But you have to be aware that whatever you are filling is your personal preferences. This is not something कि वो आपका फाइनल है कि मतलब किसी ने अगर फॉरेन सर्विस को पहले भर रहा है तो आपको भी फॉरेन सर्विस पहले भरनी है, पुलिस सर्विस को ऊपर भर रहा है तो आपको भी पुलिस सर्विस भरनी है, नहीं. बट in case you feel there are some tricks like that, if you do not fill foreign service in the first 5 preferences, there's a minuscule chance you will get it. If you do not fill IPS in the first 5 preferences, there's a very less chance you will get IPS, because all the people who are getting even better rank than you and a lower preference to those services will get it.
सो वहां तक आपके टाइम तक बचेगा ही। तो इफ यू आर, या फिर आपकी जो दूसरी सर्विसेज हैं उसमें आपको पहले मिल जाएगा, तो आपको आईपीएस जब वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। इट इज वेरी अनलाइकली कि आईपीएस को आदमी जो है सिविल अकाउंट से नीचे भरेगा। इफ यू आर फिलिंग इट बिलो सिविल अकाउंट, देन दैट मीन्स कि आपको आईपीएस नहीं मिलेगा, सिविल अकाउंट मिलेगा। अब आपका किस्मत मतलब वैसी होगी एकदम डिफरेंशियल एकदम जा रही होगी कि सिविल अकाउंट की सीट नहीं आई होगी, या फिर सिविल अकाउंट किसी ने पहले भर दिया होगा आपसे, देन यू विल गेट आईपीएस। So that is which is something which has a low probability to get. तो आपकी ये प्रेफरेंसेस आप भर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कार्डर्स, सी कार्डर इज समथिंग विच इज टोटली ऑन टू यू। अगर आप पहला अपना होम कार्डर भरते हैं, देन यू विल गेट योर होम कार्डर, अदरवाइज यू विल नॉट गेट योर होम कार्डर इन केस यू आर फिलिंग इट लोअर इनटू द प्रेफरेंस चेन। तो अगर आपको लगता है कि आपको होम कार्डर चाहिए तो पहले भी भरिए। अगर आपको होम कार्डर में काम करने का मन नहीं है तो होम कार्डर के अलावा कोई भी कार्डर भर दीजिए, आपको उसमें फिर होम कार्डर कंसिडरेशन में नहीं आएगा। एंड डू नॉट थिंक कि आप ऐसा करेंगे तो आप पहले व्यक्ति होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट मेरे बैचमेट जो था मेहनत घोष, ही फिल्ड अप हिज होम कार्डर लोअर देन द अदर कार्डर, ही गॉट हिज फर्स्ट प्रेफरेंस। इसने महाराष्ट्र भरा था पहला कार्डर, उसको महाराष्ट्र मिला था। ही बिलोंग्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल। So there are too many examples जहाँ पे लोगों ने होम कार्डर अपना नहीं भरा है, and it is not something which you will be judged upon. They might ask you कि आपने होम कार्डर क्यों नहीं भरा है, in case you have a valid answer for it. Like he answered कि he wants to explore the other parts of India. He has lived quite a significant amount of time in his home state, and he wants to go out. That is why he has not filled up his home कार्डर as a first preference. So viewers will accept that. That is something अगर आपका पर्सनल है, अगर आपको सेटिस्फाई कर सके तो दे विल एक्सेप्ट इट। तो इसके अलावा नाउ आई वुड सजेस्ट कि जिसमें कमिश्नरेट्स होंगे, पुलिस कमिश्नरेट्स होंगे, वहां पे आप पुलिस सर्विस को ऊपर भर सकते हैं आईएएस से, या फिर वो स्टेट्स को आप पहली ज्यादा बड़ी हाई हैवी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं इंडिविजुअल जोन में। बट दैट डिपेंड्स, अगेन दैट डिपेंड्स वेदर यू एक्चुअली वांट टू वर्क देयर और नॉट। Just fill the cadres where you actually want to work. तो इसके बाद the floor is open. अगर आपको एक दो जो भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में पूछने हो तो पूछ लीजिए। तो सर मेरा एक डाउट था सर, कंफ्यूजन का कार्डर एलोकेट मतलब फिल करने में महाराष्ट्र और एमपी में। महाराष्ट्र और एमपी, सी महाराष्ट्र is a very good cadre for police. In case you want to fill for the police, give it a higher rating. Okay. If you are going for the IAS, means again this is something which is personal, I would suggest कि MP बन जाइए। Okay, ठीक है सर। Good afternoon, sir. Good afternoon. सर आईपीएस सर्विस मैं नहीं बनना चाह रही हूँ क्योंकि रीजन बीइंग कि मुझे नोकनीज है। सो मेरे को पता है कि आगे जाके मेडिकल में मुझे इशू हो जाएगा, तो शुड आई नॉट फिल इट, और या फिर उसको नीचे प्रेफरेंस में डाल दो? बिकॉज सम पीपल से कि उसको नीचे डाल दो, अदरवाइज इट विल रेज क्वेश्चंस, समथिंग लाइक दैट। इंदु, आई वुड सजेस्ट कि नौकनीज हैं नहीं है ये बहुत टफ होता है डिसाइड करना अपने से। ओके, ठीक है ना? तो अगर आपको वाकई में आईपीएस नहीं चाहिए तो उसको नीचे डाल दीजिए। अदरवाइज डू नॉट थिंक कि नौकनीज आपने जज कर लिया तो नौकनीज है आपका। क्योंकि नौकनीज हो गया, फ्लैट फुट हो गया, दीज आर सम ऑफ द, मतलब आई वुड नॉट से डिफॉर्मिटी, दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस व्हिच आर वेरी स्पेसिफिक एंड यू डू नॉट नो कि वाकई में आपको नौकरी है कि नहीं है, और मेडिकल में वाकई आप अनफिट होंगे कि नहीं होंगे। तो जस्ट बिकॉज नौकरी अपना डिसीजन मत लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आईपीएस में वाकई में यू आर नॉट, you do not have preference for IPS, then you can fill it at maybe 7th or 8th position. अगर आप पूरी तरह से उसको eliminate भी करना चाहते हैं तो भी there is no harm. I was explaining it to Soumya also कि this will open up a new question to you in the interview probably. तो इंटरव्यू में अगर मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से आपने 10 क्वेश्चन भी आपने फिगर आउट कर लिए, तो इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर यू। जी सर। तो अगर आपको लगता है कि आपको आईपीएस में काम ही नहीं करना है, आपको दैट सर्विस इज नॉट फिट इनफ फॉर यू और यू आर नॉट फिट इनफ फॉर दैट सर्विस, तो आप उसको नीचे भर सकते हैं, चाहे तो उसको पूरी तरह से हटा भी सकते हैं। जी,
तो सर ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है। तो लास्ट टाइम मैंने भरा था आईपीएस और मेरा जो मेडिकल हुआ था उसमें उन लोगों ने मुझे नहीं पॉइंट आउट किया कि ये नोकनीज है। मैंने वही बोला ना कि नौकरी जी इज समथिंग कि हम लोग अपने से जज नहीं कर पाते हैं, और कोई भी आप आसपास के कोई दूसरे कैंडिडेट से बात करेंगे ना, जी तो वो नौकरी को ऐसा नहीं है कि वो बता देगा आपको, जो फाइनल बता देगा वही मेडिकल बोर्ड भी बताएगा आपको। नहीं, नौकरी इज समथिंग विच समटाइम्स इज आइडेंटिफाइड, समटाइम्स हमें लगता ही नहीं है कि हमें नौकरी है और वहां पे जाकर आइडेंटिफाई होता है। तो जी सर नौकरी केवल सोली नौकरी के बेसिस पे आप अपने आप को कोई ऐसी चॉइस एलिमिनेट मत करिए। लेकिन जी अगर सर आपको कुछ पता है डेफिनेटली, जैसे कि आप कलर ब्लाइंड है सपोज, आपको पता है कलर ब्लाइंड है, अब अगले साल तो वो चेंज होगा नहीं, जी है ना। सर आपकी हाइट जैसे हो गई, हाइट इज समथिंग विच यू वोंट चेंज, आप जी अगले सर साल भी जाएंगे तो वो जाएगी नहीं, और आपकी प्रेफरेंस नहीं है आईपीएस, तो मत भरिए उसको, भरिए मत, जी नीचे रख दिए। तो यूनिफॉर्म सर्विस जितनी होगी, आरपीएफ भी हो गई, उसको भी आप हम्म। मत भरिए, उसको भी रख दिए। वैसे ऐसा मेरा कुछ अगेंस्ट नहीं है सर्विस के आईपीएस के, मतलब मैं भर दूंगी, बट मेरा सिर्फ यही एक कंसर्न था कि मान लीजिए मुझे एलोकेट हो जाती है तो क्या आगे चल के और भी कोई स्पेसिफिक मेडिकल्स होते हैं। मान लीजिए पहले मेडिकल ने मुझे फिट डिक्लेयर कर दिया एंड देन मुझे क्योंकि आगे का प्रोसीजर नहीं पता कि नहीं, फिर उसके आगे बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल्स वंस होते हैं। मेडिकल बोर्ड डिक्लेयर्स यू फिट, तो हम्म। उसके बाद इतना कोई आपको हार्म नहीं होता है। उसके बाद यू डू नॉट थिंक कि अगर बाद में फाइंड आउट हुआ, फिगर आउट हुआ, तो आपको ट्रेनिंग से डिबार कर दिया जाएगा, उस तरह से नहीं होता है। जी लेकिन सर। बट बिलीव मी, नौकरी इज सम ऑफ द थिंग्स, ये जो हम्म। कुछ कंडीशंस होती है ना, जो कि हमें आउटराइटली पता नहीं होती है, या फिर पता हम लोग अपने से जज कर रहे होते हैं, और एक्चुअल में रियलिटी कुछ और होती है। दे आर यस सर। मैनी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट जिनको वहां पे जाके मेडिकल बोर्ड में पहली बार पता चलता है कि अच्छा, जो आपको कंडीशंस ऐसे पता है फॉर डेफिनेट कि जो चेंज नहीं होंगी, वही केवल आप जो है वो उसी के बेसिस पे कोई सर्विस एलिमिनेट करिएगा। अगर आपको लगता है किसी सर्विस में इंटरेस्टेड है या फिर न्यूट्रल है, और आपको वो कंडीशंस आगे जाके चेंज हो सकती हैं, वो सब्जेक्टिव है, तो उसको मत करिएगा। जी सर। एनी अदर क्वेश्चन? Sir, just one more question. So in my hobbies, last time I have written ki teaching data science because I am an assistant professor. So I have written that teaching data science in my hobbies. But then I felt later that maybe because this is my profession, so should I write teaching as a hobby as well? Because that is something I enjoy. I do learn more stuff about data science, See, as machine I told learning. you, na, okay, be honest. In case you Mhm. feel that teaching is something which is your hobby also, passion also, and that is something which is your job also, Right, तो sir. इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। Okay, sir. एंड Okay. दिस डेटा साइंस इज सम ऑफ द बज वर्ड, जिसमें इंटरव्यू बोर्ड डेफिनेटली पूछेगा। मतलब मेरे सामने कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाए जिसने डेटा साइंस लिखा होगा, तो मैं शायद Mhm. उसका पूरा इंटरव्यू डेटा साइंस पे ले लूँ, Right, बिकॉज sir. दिस इज वन ऑफ द बज वर्ड इन द मार्केट टुडे। तो Last time they just asked me what is blockchain technology from this whole area. Other than that, they were more on current affairs. And my father was is in army. He is retired now. So they asked me how many services are there in army, and other than army, what all forces are there. Something like that. so see that till last time, I don't know when you gave the interview, it was last year। Yes, sir. Last year. हाँ, तो लास्ट ईयर, सिंस गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ लेट व्हेन इट कम्स टू अडैप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, तो Yes. लास्ट ईयर तक इतना नोन चैट जीपीटी था भी नहीं। But Yes, the sir. recent advances with the AI ML, I believe everyone will be interested into data science now. Okay, If sir. I told you, na, if I get, see, data science is something which even I am interested in. I Mm-hmm. also had done a lot of courses in the data science. So data science is one of the buzzword, and there's a huge probability at least 3-4 questions will be drawn from that particular data science. So Okay. if you that is your hobby, so prepare it well. Okay, sir. Since you are already teaching it, you, I believe you must already be comfortable with it. But do be ready कि आपसे पूछा जाएगा, Yes, sir. और So, ब्लॉकचेन टाइप sir, के क्वेश्चन नहीं, इस बार तो बहुत डेफिनेटली वो एआई एमएल में पूछेंगे। sure, sir, sure, sir. हाँ, And one more thing, in my achievements, I have written one is my GATE scholarship, and another is I have written that I have been part of one of the best performing team at a startup. I was data analyst there, so I have written it. Why it is true definitely, but why I have written is because I want them to talk about it. So is it fine or should I not? that is fine, that is completely fine।
बट एज आई टोल्ड यू ना कि इवन विद द सो कॉल्ड एकदम एवरेज हॉबी से भी और एवरेज एक्सप्रेशन से भी दे विल आस्क क्वेश्चंस व्हिच यू कैन नॉट एक्सपेक्ट. तो बी रेडी देयर इटसेल्फ, यू हैव टू पुट अप्लाई योर माइंड देयर. मैंने आपको जैसे जापानीज कॉमिक्स का एग्जांपल दिया था कि दे हैव आस्क्ड कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 ऑन द जापानीज कॉमिक्स. अब ये मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि इसका कोई इम्पैक्ट होगा. बट then again, since I was into that manga reading habit, so I had kind of an opinion, a kind of an understanding of that particular question. Yes, sir. तो And उसी हिसाब से रेडी रहिएगा. okay, sir. Sir, one more hobby I have is reading ethnographic fiction novels. So the thing is, I read a particular kind of novels. Last year, when I was filling my DAF, I figured it out that this is a correct name for it. It's not that I thought कि ये नाम अच्छा है इसलिए मैं ये लिख देती हूँ. मैंने पहले समझा कि मैं किस टाइप के novels पढ़ती हूँ. फिर then I researched about it, what to call it. Into what I feel ना कि your DAF will be very interesting for the examiners. Okay. तो अगर आप इस टाइप के कीवर्ड्स देते हैं ना उनको, ethnographic novels, fiction novels, naturally it will help the interviewers also to get led by your DAF. Okay. तो then prepare your DAF well. Sure, जो आपके DAF होगा ना उधर से काफी क्वेश्चन निकलेंगे. और DAF अच्छा भरने का मतलब ये नहीं होता कि यू विल फेचिंग मोर मार्क्स. नो. DAF अच्छे भरने से केवल एक फायदा होता है कि योर इंटरव्यू माइट बी लेड टुवर्ड्स योर DAF. ओके. अगर आप फ्लैट देते हैं तो उसमें यू द एंटायर वर्ल्ड इज ओपन टू यू फॉर द इंटरव्यूअर टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम. अगर आप DAF स्पेसिफिक देते हैं एकदम जैसे आप दे रहे हैं, तो बी वेरी पर्टिकुलर कि जो भी आप वर्ड लिख रहे हैं ना, इथनोग्राफिक नॉवल अगर लिख रहे हैं, फिक्शन नॉवल, then you should be understanding this word also, and you should be actually interested into that particular novel reading habit. Yes, sir. तो 10-12 नॉवल का नाम लिख के चले आइएगा, जो फेमस नॉवेल्स हैं उसको पढ़ लीजिएगा. इथनोग्राफिक आपकी कैटेगरी में, फिक्शन कैटेगरी में जो भी अच्छी नॉवेल्स होंगी, एटलीस्ट टॉप की 5 जो बेस्ट रेड या फिर बेस्ट सेलर्स होंगी, उसको पढ़ लीजिएगा. Sure, sir. Sure. Sir, one last question. So I practice meditation through a app. It is called Headspace. Maybe you have heard of it. Last time I was researching it, ki what is the base meditation technique that they use. So they have written Vipassana meditation, and I have written that. So what happens that when you write Vipassana meditation, so they expect you, because the popular thing is that you have done some 10 days ka course for Vipassana, something like that. So they expect that you maybe you have done the course, but I haven't done the course. I just See, wrote it because yes sir, I got because it. I got the entire picture. See, I would suggest कि जब अपनी हॉबीज को खुद ही एक बार इंट्रोस्पेक्ट कर ले, which are your casual hobbies and which are the hobbies which you are seriously into. If you give too much of hobby, तो आपको कोई हॉबी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा. Okay. ठीक है ना. तो it is always better क्योंकि you are doing it casually, means just on the basis of application, means this is what I'm presuming. You might be very serious about it, but this is what I'm presuming. In case your entire understanding of meditation is based on a single app, so better do not write it, because then you'll be leading them to a sphere where you are not comfortable with. अब वो पूछेंगे कि विपासना, how is vipassana meditation different from any other form of meditation? Will you be able to, means right now, will you be able to answer it? That is what I felt last time, although they did not ask me anything on that particular But area. if I ask you right now as an interviewer, how does vipassana meditation differs from, say, heartfelt meditation? So how it is different? Can you explain it to me? Right. I am not very comfortable with that. I will just read some text because I haven't actually practiced that form of meditation. Right. And I just know the app. And everybody has suggested me do not write the app. Even I said the same thing, na? If right, your sir. entire understanding of meditation depends upon a single app, do not write it. Yes, sir. Yes, sir.
Just one. I'm so sorry, but just No, no, last no thing I issues. do want to. I have 4 minutes with me before I have to carry on. Okay, So I'll you can just ask. take 1 minute, sir. Uh, Uh, Sir, so I practice yoga and meditation. So yoga is something which is I'm more serious about. So I have asked my teacher ki what kind of yoga do we practice on a daily basis, and whatever you teach, what is it called? So she told me that this is Ashtang yoga, and Ashtang yoga mein dhyan is also a part of Ashtang yoga. So she said ki maybe you should just write Ashtang yoga, and then because dhyan this comes into this, it has 8 limbs, so it will fall into that. So if you will just write one word instead of these two words ki meditation and yoga, that will do. So I believe I should do that. Maybe what See, is your no, opinion? again, you are pointing out a domain which I don't know how comfortable you are. Ashtangik yoga जो है ना, तो Ashtangik yoga, as I was saying ना, कि Ashtangik yoga is something which every single panelist in that interview will be knowing about, and they expect you to know something more than that. Okay. So, in case you feel that you can gather such kind of a knowledge prior to appearing in the interview, you write it. Mhm. But in case they start asking you about Ashtangik yoga, Mhm. then you should be knowing about yourself ki whether you are comfortable or not. And you already have too many pointers in your DAF to ask Mhm. questions on. You do not have to write anything just to please them, just to Mhm. lead them. है ना? Yes. So don't fret about it कि अगर आप अष्टांगिक योग नहीं लिखेंगे तो आपकी एक हॉबी खत्म हो जाएगी जो कि Mhm. आप वहां पे मेंशन कर सकते थे, बोल नहीं पाएंगे. तो अगर आपको लगता Okay. है कि कहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप बोल सकते Mhm. हैं अष्टांगिक योग के बारे में. बट Okay, डू sir. नॉट राइट एनीथिंग फ्रॉम योरसेल्फ उस डोमेन के बारे में जहां पे आप कंफर्टेबल हो. एंड वन Sure, थिंग sir. मोर आई वांट टू पॉइंट आउट, जस्ट इन केस अगर आप इंटरव्यू में आता है तो कॉल इट Mhm. योग, नॉट योगा. Okay, sir. It is Okay. not about just also pronunciation. It is about leading the interview to somewhere where you will showcase something about yourself. ठीक है. The correct pronunciation is योग, call it योग. ये तो अंग्रेज बोल नहीं पाते थे इसलिए उन्होंने यही लगा दिया, योगा कर दिया, उसको राम को रामा कर Okay. दिया. तो Sure, बट sir. Sure. the exact word is योग, say it योग, है ना. And like you said, Ashtangik योग has ध्यान also, but Mhm. ध्यान is one of the later phases of Okay, sir. अष्टांगिक योग. ठीक है ना. तो उसमें आपके पहले जो 7 हैं वो आपको Mhm. पता होने चाहिए अच्छे से. Okay, तब sir. जनरली इन अष्टांगिक योग यू रीच टू अ पॉइंट वेयर ध्यान इज देयर. यू Okay, कैन sir. इंडिविजुअली आल्सो प्राणायाम भी आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड इन द अष्टांगिक योग कि आप वन बाय वन जाएं. तो Okay, अगर sir. आप वैसे जा रहे हैं एंड यू आर कंफर्टेबल टू आंसर इट, जस्ट आंसर इट, है ना. Okay, sir. Sure, sir. सोमय, यू वांट टू आस्क एनीथिंग मोर? नो सर, थैंक यू. ठीक है. आपकी डैक में ना समय यस सर. आपने इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, प्राइजेस, मेडल्स, स्कॉलरशिप वगैरह पोजीशन में ना. ये 4 14 पे जो 4 पॉइंट है ना, यस इसको सर. एक बार फिर से रिव्यू कर लेना. जैसे मैंने इनको भी बोला है, राइट समथिंग इन केस यू वांट द इंटरव्यू टू बी लेट. ओके. ठीक है. तो आप जैसे कि अगर आपने सिंगिंग लिखी है, अगर यस आप सर. कोई स्पेसिफिक सिंगिंग के टाइप को अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, दैट इज ओके. ऑलवेज बेटर. अगर आपको लगता है कि सिंगिंग लिख के मैं एक क्वेश्चन ड्रॉ करना चाहता हूँ कि वो पूछे मेरे से कि विच टाइप ऑफ सिंगिंग, यस सर. ऐसे आपने लिसनिंग पॉडकास्ट लिखा है तो लिसनिंग पॉडकास्ट में कौन से स्पेसिफिक पॉडकास्ट आपको पसंद है, एटलीस्ट वो आप आइडेंटिफाई करके रखना, है ना. ओके सर. पॉडकास्ट में भी अगर आप स्पेसिफिक जा सको कि टेक्नोलॉजी बेस्ड पॉडकास्ट में जा रहा हूँ या तो मैं पर्सनैलिटी बेस्ड पॉडकास्ट में जा रहा हूँ, पॉडकास्ट कि फिर थोड़ा बहुत आपको पॉडकास्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि व्हाई पॉडकास्ट बिकेम फेमस यस सर. एंड वेदर व्हाट इज द फ्यूचर फॉर द पॉडकास्ट. इफ आई आस्क यू कि 10 साल बाद, अब तो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं या फिर और भी मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस यस सर. अवेलेबल हैं, नॉलेज यस अवेलेबल है. सर. हाउ डू यू यस. सी पॉडकास्ट ग्रोइंग और लूजिंग इन द फ्यूचर. So that such kind of a questions you should be ready with. यस सर. ठीक है. तो एक बार आप दोनों लोग को मैं सजेस्ट करूंगा कि छोटे छोटे ग्रुप बना लीजिए और वो ग्रुप में अपनी डैफ सर्कुलेट कर लीजिए. जो इंटरव्यू दे रहे हैं ना, जितने लोग पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं, उसका छोटे छोटे ग्रुप बना के आप आपस में शेयर कर लीजिए. उस पे जितने क्वेश्चन ड्रॉ कर सकें करिए. और मॉक्स में ज्यादा मॉक्स नहीं करने हैं. देखिए 10-12 मॉक नहीं करने, 50 मॉक करके किसी को कुछ एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन मॉक करने हैं.
मॉक इसलिए करने हैं क्योंकि आपको थर्ड व्यू, पर्सन व्यू तभी मिल पाएगा जब आप जाके मॉक करेंगे। ठीक है, हर जगह पे नहीं भागना है, हिंदनगर की हर कोचिंग में नहीं जाना है कि जा जाके आप हर एक दरवाजा खटखटा रहे हैं कि मेरा मॉक ले लो। ठीक है, तो क्योंकि मॉक्स सस्ते भी होते हैं, कभी कभी मॉक्स फ्री भी होते हैं, तो आपको हर जगह पे नहीं जाना है, लेकिन वहां पे जाइए जहां पे प्राइमरली सिविल सर्वेंट्स बैठे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। नथिंग अगेंस्ट एनी अदर प्रोफेशन, बट द थिंग इज एवरी प्रोफेशन कम्स विद द पॉइंट ऑफ व्यू। तो I should not be asked talking about any particular specific coaching, but the thing is कि since I have pointed out, मेरे टाइम पे उसने जो इंटरव्यू लिया था उसमें प्रोफेसर्स बिठा रहे, and they had completely different point of view of the entire world than civil science। मतलब वो फेसबुक वाला जो ज्ञान होता है ना, वो फेसबुक वाले ज्ञान पे they were asking questions, they were drawing inferences from it। So you do not have to go for a plethora of mocks, but जो mocks आपको लगे कि अच्छे हैं उसमें आप अपीयर। With this I will end। तो thank you Vinay for inviting me। अच्छा, I expected this session to end before my lunch time ना, but I got interested into and remembering my own time, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। Though it was comprehensive, but I believe कि अब आपको DAF फाइनल करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, और DAF फाइनल करने की हरी में मत रहिएगा। In case last day is tomorrow, आप tomorrow maybe in the morning or afternoon you can finalize। ये मत कहिएगा कि आज ही मुझे फाइनल करना, आज ही खत्म करना है, सबमिट कर देना आज। सबमिट जल्दी करके आपको ऐसा नहीं नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो एक बार फिर से थोड़ी देख लीजिए, एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए अपना पूरा एंटायर टैब को। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ इंप्रूवमेंट उसमें कर सकते हैं तो आप उसमें इंप्रूवमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। विद दिस आई वुड एंड। थैंक यू विनय, थैंक यू एवरीवन फॉर थैंक यू। जॉइनिंग।